It's just appreciation for abstract room in general, because like it's been 6 months or more I've been part of it. So actually before joining abstract, my evenings or most of my days used to be very, I say, lonely in a new city. But after being a part of abstract, I've already mentioned this earlier also, that it has become very it's a place where I feel very comfortable and very relaxing. So I'll just say one line from one of my most favorite poems of Allama Iqbal. गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन है, यहाँ अब मेरे राजदा और भी है, सितारों के आगे जहाँ और भी है. Let's get started about my poem. It has two titles. One is The Useless Lover, and the second title is Poem for the Timid Self. Little bit of backdrop. This poem, this came out of Little Women. So when I was watching Little Women on the big screen, that scene which is Jo reading to her sister on the beach. So I saw that scene and I felt very bad that I cannot paint because I was not able to share that with someone. I wanted to capture, like, if you look at this painting, this has been drawn by someone and gifted to me and all of that. So like it was, I wanted to like kind of paint that and gift it, but I was like, yeah, nahi kar sakta, I cannot paint for whatever reasons. So this poem sort of came from there. It's again called as Poem for the Timid Self. I'll just start with it. There are some moments when the heart tears himself apart for not being a genius painter, for not being good enough to capture the beauty he witnessed in your absence. Sometimes in the middle of the night, he bleeds to write you a song, but damn, the punk is no musician either. The tenderness of his soul is not reflected in the melody of his voice. It comes out just as bad, no matter how deeply it hurts. He longs to wail, but does not accept being any less good than Hugh Jackman. He wants to be your poster boy, who drives the courage to look deep in your eyes and lead you into a dance where two can become one. But such a waste is this son of a gun that he wishes to be your hot priest, but holds back everything like a repressed nun. So that's him, a talented, talentless, pathetic loser with no skill, no class, no beauty to show for. He's only a silly lover with nothing but his hopeless ability to love. Thank you. Thank you. That's my poem. Oh man, I love the inspiration that came. This is so nice. The last sentence has my heart. This reminds me of if you've read A Tale of Two Cities, then there's a character called Sidney Carton, and there's this very beautiful line. The loser person, after falling in love, tells his love that since I knew you, I have been troubled by a remorse that I thought would never reproach me, and have heard whispers from old voices impelling me upward that I thought were silent forever. I have had unformed ideas of striving afresh, beginning anew, shaking off sloth and sensuality, and fighting out the abandoned fight. A dream, all a dream that ends in nothing and leaves the sleeper where he lay down. But I wish you to know that you inspired it. Hi, so I'll be presenting a short story. Story is about loneliness, self-love, and at last hope. It's a multi-layered story, and I hope everyone will enjoy it. What did you just hear? Bells? Maybe it reminds you of Santa Claus, like it did to me. But for the lady sitting across the door in her wooden cane chair, eyes fixated over the screen, for her, the bells are a messenger that gives her hope. Yes, hope. The bell rings imperceptibly. Her eyes that have sunk deep inside the face and mind that had shrunk to a size of an airless ball suddenly swells up, as though it had found a sudden influx of air. Who might be there? Her mind wandered. Perhaps an old friend, or a visitor, or merely a stranger who might have been enticed by the bells and would have stopped by to say a quick hi. Whoever might be there, she does not care, she says to herself. But at the back of her head, she knows that the jingles she has just heard has given her hope. Hope to get over her loneliness, hope to get out of her own head, hope to meet, touch, or even smell someone. She hears the tinkles of the bell again, and this time being more pronounced. She is unable to hold herself back, and in the very next moment, she stood taut as a strung bow. She rushes towards the door, and as she finds herself just about to pull the clutch of the door down to welcome the guest, she stops. She tries to check herself. No, not her face or hair, as she is least worried about them, but her emotions. She tries to conceal her excitement that was now running vigorously through her veins.
She takes a step back, curls her hair to one side, and readjusts her eyes to look as nonchalant as possible, and then finally opens the door. Ah, the empty air is all that stands between her eyes and the possibility of kinship in her life. A storm of bewilderment passes over her. She immediately jumps out of her door and checks on both sides of the road. With every passing gaze towards the receding door, she could feel the weight of earth falling over her shoulder. She is embarrassed of herself, as she has always been. She still expects someone to show up. Maybe this visitor is an old friend who might be fooling around with her just the way she used to do with her friends when she was younger. A fleeting memory of her younger self tweaked a sweet smile over her face. A couple of minutes have gone by. She sits down with her back holding the door while her eyes still fixated towards the passing road. With every passing second, the ticking sound emitting from the wall clock hanging in her drawing room is getting louder and louder in her own head. She's unable to handle the noise anymore. So she immediately switches to cursing herself, the only art she was now fluent at. In her head, she was punching herself as fiercely as possible for not showing up at the very first sound of the bell. Why she had to fool herself to let her emotions not flow out. She questions herself, and before she could come out with an answer, tears started to flow out from her eyes. Some more time had now passed, and even the tears had dried up, along with the meager hope that was left behind. Her eyes, which by now looked as dry as a desert, were now staring at the cushioned chair. The chair seems to be talking to her now, maybe expressing its own grief of missing out on the warmness of the human buttocks. Oh, how sorry she felt for the chair at that very moment, only wishing she could have felt some of it for herself as well. Well, the bell rings again, and within a fraction of a second, all the life that had died within her came rushing back. This time, she moved her eyes without giving any opportunity for the mind to speak in between. Alas, there is no one around again. Before her eyes could register the emptiness again, her hand moved toward her ear just to check whether her ears were at place or not. Well, the bell rang again, this time right in front of her eyes. Now they were not merely ringing, but swirling back and forth in full glory. Her hair, that was resting on one side of her shoulder, started to dance all over her face. Her hair had now turned into an excited youth, and her face a perfect dance floor. She closed her eyes and took a deep breath, this time just to breathe and feel the air that was now a part of her. She felt more like herself, the self that she had left far behind. And whatever that had been gained and lost with time was all present drifting beyond her mortal self. Thank you. Oh my God. Siddhant, that was great. How did you come up with this concept? So just a backdrop about this, where the setting of this story. So there's a Hamilton studio in Ballard Pier in Bombay, in Fort area. If you guys know, this is a 100-year-old photo studio where they still use the old Polaroid camera to shoot and all the other stuff, right? And they have a huge collection of all the, like starting from Jamshedji Tata to Birla, everyone used to come there for a photo shoot. So one day I went there and I found this place completely empty, and all these old pictures were hanging around. And the owner of the studio was sitting inside her own room with her laptop, and she did not care. I was roaming around and she was in her screen. She knew that nothing is going to happen. So, but still she was carrying the legacy. For her, photo was not to come in trend. It was a form to express, and she was proud of it, and she wanted to carry it forward. So that's when the idea of the story came, and I just wrote it out. But yeah, I mixed it with something else that was going in my head that time, and this is how the story came. I hope you liked it. The first poem is titled I'd Rather. So this is how it goes. I'd rather be a pixie up to no good than a saint bearing the divine with favors in mind. I'd rather be the dew that slides over the petal of life
than a grinding stone reducing my being to nothingness. I'd rather be that first rain that kisses your soul than the monsoon that fills the sea's blossoms. I'd rather be your darling this lifetime than your escort in eternal paradise. Okay, this is the first one. Another one is just glimpses. So this is like when we used to travel across Gujarat and things like that through the roads, just sights. So it's more like a picture. Passing highways, sleeping hills, brown thatchments grazing fowl, birds in flight, fleeting clouds, blue skies, black tar, white lines, green grass, withered trees, colored attire, pots on heads, matted head children, open smiles, glinting sunlight, algate ponds, falcons on wire, lazy tractors, encircling vultures, strolling cattle, clear air, sane life. That's it. Thank you so much for that. So next up we have Atharva Deshpande Kenya. Go ahead, Atharva. A very little short story about my father. It goes like this. My father is my strength pillar, and last week was the first time ever in my life that I told him I love him. I love you. The three magical words जो आजकल लोग 3 महीने के रिलेशनशिप में बोल देते हैं, मुझे 21 साल लग गए बोलने में, और वो भी उन्हें जिनके साथ मैं बचपन से रह रहा हूँ. तो हाँ, हमारे घर में 4 लोग हैं. मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन और मैं. और जो क्लासिक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां अपने पापा से क्लोज होती है और लड़के अपने माँ से, वो मेरे घर में काफी सच है. वो स्टीरियोटाइप मेरे घर में फैक्ट है वो. तो मैं तो पापा से बहुत डरता था. इट वॉज अ हॉरर स्टोरी काइंड ऑफ फॉर मी, बट उन्होंने मुझे जो पढ़ाया वो पढ़ाया. और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कितना अनफेयर है कि मेरी बहन की सारी गलतियां नजरअंदाज हो जाती थी और मेरी सारी गलतियां ढूंढ के निकाली जाती थी. लाइक किसी को ये नहीं आता, वो नहीं आता. बट आगे संडे को लोग घूमने बाहर निकलते थे और मेरे पापा मेरे बैग से किताबें बाहर निकालते थे. यूज्ड टू चेक एवरीथिंग फ्रॉम हैंडराइटिंग टू मैथ, होमवर्क, एवरीथिंग. जो उन्हें पसंद नहीं आता था वो नोट डाउन करते थे कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने ठीक नहीं किया. ही मेड मी इन द काइंड ऑफ पर्सन की लाइक जो भी एवरेज नहीं रहेगा, शायद थोड़ा सा वो एवरेज. उनकी वजह से मैं एक पढ़ाई में अच्छा हूँ और बाकी किसी चीज में नहीं. कोर्स तो मेरे लिए बहुत दूर की बात. तो आई एम लाइक ग्रेटफुल फॉर हिम कि उन्होंने मेरे को एटलीस्ट पढ़ाई में आगे उन्होंने धक्का दिया कि ये एटलीस्ट कुछ तो कर लेगा करके. वरना आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन समवेयर. अभी पुणे में मैं कुछ शायद कर ही नहीं रहा होता. मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत बार पढ़ा है कि देयर आर 5 लव लैंग्वेजेस. वो क्या बस कपल्स के लिए है क्या? बिकॉज आई कुड नेवर फिगर आउट कि मेरे पापा की लैंग्वेज कौन सी है. 10th के बाद उन्हें मेरी पढ़ाई लेना बंद कर दिया था. ही वॉज श्योर कि अभी मैं खुद पढ़ लूंगा और मैं अपने डिसीजन अभी खुद ले सकता हूँ कि आई हैव मैच्योर्ड इनफ एंड रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक माई ओन डिसीजन. एंड आई वॉज नॉट. मैंने 10th के बाद जैसे उन्होंने लाइक पीयर प्रेशर में आके मैंने डिसाइड किया कि मैं साइंस लूंगा. माई फादर गॉट मी एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट साइंस कोचिंग क्लासेस. उन्होंने 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस भर दी थी. एंड फिर मैंने बहुत ही टाइम पे डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कॉमर्स लेना है. इट वुड बी ग्रेट अगर मैं कॉमर्स ले लूँ तो. उनका नुकसान भी हो गया पर मेरे को उन्होंने बिल्कुल ही डांटा नहीं. 12th में मेरे को फर्स्ट टाइम 92% है. और अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम घर पे नहीं था उनके चेहरे की खुशी देखने के लिए. मैं कहीं बाहर था उस टाइम एंड मैं देख ही नहीं पाया कितने खुश हैं. बट मुझे पता चला कि उन्होंने पूरे फ्लैट में काजू कतली बांटी, विच इज काइंड ऑफ अ बिग डील फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली. काजू कतली इज वेरी बिग डील. वो बस दिवाली में आती है. तो 12th के पिछले टाइम आना मतलब इट वॉज समथिंग. मैंने अभी पुणे में आने के बाद रियलाइज किया कि देयर वॉज नो वन हु लव्ड मी मोर देन हिम. और आज जहाँ तक बात है प्यार की और लव लैंग्वेज की, जब वो पीठ पे हाथ रख के शाबाशी देते हैं ना, दैट इज मोर of a physical touch or words of appreciation you could get from anyone else. The sacrifices जो उन्होंने किए हैं फैमिली के लिए, it is more of a act of service or a gift giving than anything. So the only thing I regret is कि मैंने उनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है. आज भी उनके साथ वो एक डर भरा माहौल रहता है. हमारे बीच में वो डायनामिक्स है कि
पापा है, डर लगता है उनसे जाके बात करने में डायरेक्टली, कॉल पे अभी उनसे बात होती है तो इट इज फॉर अ रीजन कि कुछ चाहिए करके। इन जनरल कॉल करना इज वेरी रेयर, बट हो जाता है अभी। आई जस्ट वांट टू से कि व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू फ्रॉम my first salary is to take him on a trip because he likes traveling. He likes traveling a lot. So that is my dream, right? Thank you. One of the least spoken topics. This one is about mental health, and I'll just start with it, and then let's see. It's called हफ्ते दो हफ्ते. हफ्ते दो हफ्ते हो गए कमरा साफ किए, ज्यादा ही हो गए होंगे हफ्ता. ये शब्द भी लोग ऐसे में ही कह जाते हैं. हाँ, हफ्ते दो हफ्ते लगेंगे, तुमने कितने हफ्तों से फोन नहीं किया, इत्यादि. समय की तो जैसे कोई कीमत ही ना हो. खैर, तकरीबन 2 हफ्तों के कचरे ने कमरे को इस तरह अपना बना लिया है जैसा मैं कभी ना कर पाया. बिस्तर के बगल वाली टेबल पर, जहां हफ्ते दो हफ्ते पहले भर तक परसाई और डिकेंस विराजमान रहते थे, आज वहां बियर की खाली बोतलों का ठेका लगा हुआ है. किसी दिन इनमें से कोई टूट के फर्श पर गिर गई तो उसका दिया घाव ही मेरा अंत होगा, पर यह टेबल भी जादुई है, हमेशा एक और बोतल की जगह बना ही लेती है. बिस्तर पर इतने कागज पत्तर भर गए हैं कि मैं अब ऐसे सिकुड़ के सोता हूँ जैसे माँ के गर्भकोश में हूँ. शायद वही ठीक था. अब ये कागज रोज मेरे सपनों में आकर मेरी उंगलियों पर अदृश्य चीरे देकर जाते हैं. कोई बिल है, किसी की चिट्ठी है, कोई सामान बेच रहा है, कोई मेरी जान के बदले इंश्योरेंस दे रहा है. दिक्कत यह है कि सबको तुरंत जवाब चाहिए. हफ्ते दो हफ्ते तो लग ही जाएंगे ना मुझे यहाँ से निकलने में. क्या दुनिया तब तक इंतजार नहीं कर सकती? मेरा तारा गर्दिश में है, उगने की देर है. थोड़ी देर रुकिए तो सही. मुझे चमकने की तैयारी करने दीजिए. अगर मेहमान आ गए तो बैठेंगे कहाँ? कुर्सियों पर तो पुराने कपड़े बिखरे पड़े. ये कपड़े भी समाज की बनाई समस्या है, बिल्कुल बियर और इंश्योरेंस की चिट्ठियों की तरह. मैं हफ्ते दो हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ और मुझे कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई. वीडियो कॉल होती है तो बड़ी कठिनाई से दुनिया पर एहसान करता हुआ एक टी शर्ट जरूर पहन लेता हूँ. जब घर से निकलना हुआ करता था तो माता पिता की इज्जत के बारे में सोचकर ही सही मैं कपड़े बदल लेता था, नहा धो लेता था. अब इंश्योरेंस की चिट्ठी में बने खानों की तरह सब ऑप्शनल हो गया है. मानव भी क्या अद्भुत प्राणी है, कितने अभाव में रह लेता है. मुझे ही देख लीजिए, अभाव तो है मगर पता नहीं किस चीज का या किस किस चीज का. मन करता है कि किसी सुबह उठकर इतनी ऊर्जा से प्रज्वल हो उठूं कि सूरज तक छुप जाए, और ये नहीं तो कम से कम सुबह उठकर सूरज को देख तो लूं. हफ्ते दो हफ्ते हो चले हैं लेकिन सुबह उठना होता ही नहीं है, ना रात का सोना. दिन के घंटे कहीं वहीं छुप जाते हैं जहां हफ्ते चले गए थे. मैं भी आधा वहीं हूँ और आधा इस लोक में, जैसे बियर की बोतलें ना होकर मेरी नाव का एंकर हो. मनोवैज्ञानिक इसे डिप्रेशन बोलते हैं. सही बोलते हैं. मेरी मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये दिन आएगा और मैं खुद को ऐसे ही अपने कमरे में कचरे के ढेर बनता हुआ देखूंगा. उस वक्त किसी मित्र या परिजन से बात करनी चाहिए, नहीं तो मनोवैज्ञानिक को ही फोन कर लेना चाहिए. मनोवैज्ञानिक सही कहती है. अजीब बात यह है कि मुझे भी सही और गलत का फर्क मालूम है. यहाँ मैं एक और दिन बर्बाद कर देता हूँ और वहां मेरे तारे की मौत एक और युग के करीब आ जाती है. बस हिम्मत नहीं होती प्रज्वल होने की या कमरा साफ करने की. शायद मनोवैज्ञानिक को पता है कि ऐसे में क्या करना है. उसने इस सब के बारे में पढ़ाई की है, पर एक चीज बिना पढ़ाई के ही समझ आ जाती है कि मेरे सिवा दुनिया की कोई भी ताकत इस कमरे को साफ नहीं कर सकती, और मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ. पर हफ्ते दो हफ्ते बाद ना जाने क्या हाल हो. शायद मैं पीठ सीधी करके सो पाऊं. शायद ओलिवर ट्विस्ट जहां खोया था वहां उसे वापस ढूंढूं. इंश्योरेंस वालों को कसम खा के कह पाऊं कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ. महफिल की तरह सफाई की शुरुआत भी तो एक बोतल से करनी होगी. मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा. हफ्ते दो हफ्ते में ये पता चल जाएगा कि इतनी तड़प में जीते इंसान की भगवान सुनता है या नहीं. हफ्ते दो हफ्ते से लग रहा है कि वो भी इस धरती को मेरा कमरा समझ बैठा है. या that was that was the first one. It talks about being depressed and not being able to get out of your room, which I think a lot of us went through during COVID. That even when you could, we became sort of housebound. It's like a lot of us haven't been able to come out of it yet. When you have a little animal and you tie it for a while,
And when the animal grows up, even if you free it, it doesn't go anywhere because it thinks it's limited to wherever it was tied. Okay, this one I think a lot of you will, since some of you move between Mumbai and Pune, we have all seen urbanization and how it's neoliberal urbanization and how it's claiming a lot of the free spaces we have. And a lot of that is highly political, but a lot of that is extremely personal as well. And it's the personal I write about over here. I'll just start with it. सब बिक रहा है, सब बिक जाएगा. मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, किताबों की किसी ढेरी में सबसे नीचे दबा हुआ. थोड़ा बोझ जरूर सहना पड़ेगा, पर मैं इंतजार करूंगा. सुबह तो उसी दिन बिक गई थी, जिस दिन हमारे रोशनदान के ठीक सामने एक इमारत खड़ी हो गई. मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर इमारतों का यही फितूर है, वे टस से मस नहीं होती. सोचा कि अगर मैं जलजला होता तो शायद कुछ कह भी पाता, लेकिन उसके पथरीले बदन को छूकर मैं वापस आ गया. इसी तरह शाम भी बिक गई. समुंदर को देखने गया तो पाया कि यहाँ भी सिनेमा के माफिक सीटें लगी हुई हैं. कुछ सहमा सा मैं पिछली कतार में जाकर बैठ गया. आगे वालों ने बताया कि सूरज ढल रहा है. बादलों की लालिमा से अलविदा कहकर वो भी चला गया. रात में मैंने चांद से अपने अकेलेपन की बात करनी चाहिए तो चांद ने अनसुना सा कर दिया. उसकी भी गलती नहीं है. दुनिया का कोई ना कोई कोना अपना दुखड़ा सुनाने आ ही जाता है. इस शहर के बाद चांद को बाकी दुनिया का भी चक्कर लगाना है. मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी दुनिया को अनसुना करने की आदत सी हो चुकी है. तारे तो खैर उसी दिन बिक गए थे जिस दिन धरती नीलाम होना शुरू हुई. धुएं और चकाचौंध में बेचारे कहीं छुप गए. दिन में तो वैसे ही कतराते हैं, अब रात को भी नहीं आते. रूठ गए हैं शायद, पर यह बात कहने में उन्हें सैकड़ों साल लगेंगे. तब तक ना शहर रहेगा, ना मैं, और ना ही तुम. सोचा तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा, पर तुम्हारा पता भी बिक चुका है. अब वहां एक रेस्टोरेंट है जो मेरे गुजरते ही अट्टहास करने लगता है. पूछता है, अकेले हो? मैं इस सवाल से घबरा सा जाता हूँ. क्या हर कोई अकेला नहीं है? क्या हर कोई रात को समुंदर किनारे एक बहरे चांद से गुजारिश नहीं करता? डर लगता है कि ये चांद भी नीलाम हो जाएगा और जब टिकट के नाम पे मैं कविताएं और सूखे फूल निकालूंगा तो मुझे हंसकर टाल दिया जाएगा. इन किताबों के बाजार में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मेरा लिखना किसी को बेहतर नहीं बनाता. मेरा लिखा पढ़ के लोग कम दाम में नीलाम होने लगते हैं, कहीं खो जाते हैं, मुझे किसी नशा फरोश की नजर से देखते हैं. मेरे लिखे को किताबों की किसी ढेरी में सबसे नीचे दबा देते हैं. सोचता हूँ मैं भी नीलाम हो जाऊं, पर इस उम्मीद में दबा रहता हूँ कि तुम्हारे हाथ एक दिन आकर मुझे खरीद लेंगे, अपना लेंगे. तुम्हारे घर में पड़ी ऐसी अन्य अनाथ किताबों के साथ मुझे भी भूल जाएंगे. ये मेरी कब्रगाह होगी, पर मैं ईसा मसीह की तरह वापस नहीं आऊंगा. मेरी मजार वहीं पे बना देना और मेरी अस्थियों को वापस नीलामी के लिए सौंप देना. और कुछ होना हो, शायद भविष्य तो नीलाम नहीं हुआ है. यही सोचकर रोज इन बाकी लफ्जों के ढेर का वजन सहता हूँ. किसी दिन चांद से मिला तो दुखड़ा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि पूछूंगा कि बाकी तारे कहाँ हैं. किसी दिन सूरज से मिला तो पूछूंगा कि क्या वो थक नहीं जाता एक ऐसी एहसान फरामोश कौम के लिए जो रोशनदानों को बख्तरबंद करने पर आमदा है. किसी दिन तुमसे मिला तो कुछ नहीं कहूंगा, जो भी है इन पन्नों में है. शायद तुम समझ नहीं पाओगी, पर ऐसा भी ठीक है. सैकड़ों मील दूर के सूरज से थोड़ी धूप सेक लेते हैं. तुम्हारे हाथों से तो शायद जल ही जाऊं, पर ऐसा भी ठीक है. ये लफ्ज शाम की हवा है, कुछ देर में शब्द सब भूल जाएंगे. नीलामी चांद के दर्शन की हुई है, मेरी नहीं. ये बात अलग है कि हम दोनों ही किसी और की रोशनी से उजागर. कभी चांद मिला तो इस बात पर भी चर्चा होगी. सूरज के लौट आने तक समुंदर का किनारा खाली ही रहता है. दिस वन इज कॉल्ड आधी अधूरी कविता. आधा हूं, मैं सादा हूं, कभी कभी कुछ ज्यादा हूं, ज्यादा से ज्यादा वादा हूं. जो हूं और मैं जैसा हूं, क्या जाने मैं कैसा हूं, इस कविता के ही जैसा हूं. आधी है, ये सादी है, ये कितनी है, बस इतनी है, पर फिर भी चाहे जितनी है ये पूरी तुम्हारे लिए. बस मुझ जैसी, हाँ मुझ जैसी, पूरी पूरी तुम्हारे लिए. This is how I like to end. This is very Sahir Ludhianvi is one of my favorite poets, and when he wrote मैं पल दो पल का शायर हूँ, there's a line which goes कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले. I think those lines are absolutely beautiful because while being self-deprecating, they're so hopeful that
even if you and I are not here tomorrow, there will be better listeners, there will be better poets, and this tradition of how we recite poetry to each other, like we are doing right now, shall always continue. And that's something I live by, that's something I believe in, that's something I see happen right now. So I'm just really grateful and glad for that. Thank you Thank so you. much, Srijan. We are grateful and glad to have you and have you perform that especially. And I'm really, really glad that you took up mental health to be spoken in a language that is, this topic hasn't been taken up much in Hindi. So thank you so much for taking that up. That is an angle that I hadn't thought of. Hi everyone, my name is Yashvi. I am a student from Mumbai. So coming to the poem that I'm reciting today, before that, I'd give you a little context to it. So I lost my father a year and a half ago. So this poem that I'm going to recite is the poem that I wrote for him on his first death anniversary. Before that, I'd like to show you something. This is a book. It's called Dear Babu. I got this published on the day of his death anniversary. This is my ode to him. Whatever poems that I've written for him in this one last year are published in this book. It's not for sale. This is just my little thing that I could do for him. At least I feel so. Yeah, so this poem I wrote on the day of his first death anniversary. बड़ी सिंपल सी कविता है. इसके जरिए बस इतना ही जाहिर करना चाह रही हूँ कि पापा मैंने ये 1 साल कैसे गुजारा है आपके बिना. तो लिखा कुछ यूं है कि मेरे मन में उठा था एक सवाल कि पापू आखिर होता ही क्या है 1 साल. तो मैंने जाकर किया ये सवाल सबसे. मैं सोच में पड़ गई हूँ, मुझे जवाब मिले हैं जब से. पहले ने कहा कि 1 साल पल के झपकते ही बीत जाता है. तो दूसरा ये साल कब गुजर गया ये समझ ही नहीं पाता है. किसी ने कहा कि दुनिया के सबसे लंबे पैर हैं 1 साल के पास. तो कोई कहता कि वो दौड़ता इतना तेज है कि हमें होता ही नहीं है एहसास. पर आखिर में मैंने जब ये सवाल अपने आप से किया, मेरे दिल ने तो पापू कुछ अलग ही जवाब दिया. पिछले 1 साल का हर लम्हा हर पल मैंने महसूस किया है, क्योंकि ये 1 साल पापू आपकी चीनू ने अपने पापू के बगैर जिया है. आखिरी बार चीनू सुने हो गए महीने 12. साल हो गया ये एहसास हुए कि अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी दोबारा. 52 हफ्ते बीत गए पापू जब गले से लगाया था आपको आखिरी बार. साल हो गया ये एहसास हुए कि आप मेरा माथा कभी नहीं चूमोगे दोबारा. 365 दिन हो गए पापू, हर दिन हर रात पछताती हूँ. कोशिश तो बहुत करी मगर अपने आप को माफ नहीं कर पाती हूँ. मेरा सबसे बड़ा डर मेरे हकीकत बनकर मेरे सामने आया था आज ही के दिन पापू. मैंने अपना सब कुछ गवाया था. 12 महीने 365 दिन हो गए जैसे हम जी गए जैसे तैसे. डर लगता है ये सोचकर पापू कि आगे की जिंदगी जिएंगे कैसे. एक बात बताइए पापू, आखिर आपको इतने जल्द ही क्यों जाना था? मुझे तो आपके सपने पूरे करने थे, आपके साथ वक्त बिताना था, आपके साथ फिल्में देखनी थी, गाने गाने थे, घूमने जाना था. और तो और पापू आपके घर जमाई को ढूंढ उसे घर भी तो लाना था. आपके साथ 1 साल से आपकी बच्ची कोशिश कर रही है पापू, पर न जाने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है. अपने पापू को बस एक बार गले से लगाने की ख्वाहिश उसे पल पल तड़पाती है. मगर आप देख रहे हैं उसे और ख्याल रख रहे हैं उसका, ये बात बहुत अच्छे से जानती है वो. इसीलिए पापू आपके जाने के बाद भी अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बेटी मानती है वो. शुक्रिया. I don't know what to say to this. It was beautiful, Yashi. I have goosebumps. I'm not even lying. And if there's anyone who wants to say something to Yashi, and thank you so much, Yashi. If I may, Yashvi, it was very beautiful. And remember this, you're always guided by Papu now. You know, when he was alive, probably there was a physical barrier, but now he's constantly kissing you, holding you, and guiding you. Piece that I wrote was about myself. What I think is कि हम लोग अपने आजू बाजू वाले जितने भी लोग होते हैं
आवर पेरेंट्स, आवर रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर्स, हम उन सब का ध्यान रख लेते, पर हम कभी खुद का ध्यान नहीं रखते। वी नेवर आस्क आवरसेल्व्स कि यार कैसा है, सब ठीक चल रहा है, खाना खा रहा है तू ठीक से? तो मुझे एक बार बहुत गिल्ट हुआ उस बात का। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं ना खुद से मिलूंगा कुछ ना कुछ करके। मैं मिलने गया, बैठा एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, यार मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में। तो उस मोमेंट के पहले बहुत सारे थॉट्स ऐसे थे जो मेरे अंदर आ गए, तो मुझे लगा ये तो गलत है, मैं खुद से मिलने गया तो भी बहुत कुछ आ गया। तो उसपे मैंने लिखा कि आज सोचा खुद से मुलाकात कर लेता हूँ, जो कब से अधूरी है वो बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ खुद से कुछ सवाल, कैसे हो, ठीक हो, याद हो या कोई अपराध हो। तो खुद से मिलना है ठान लिया, खुद को थोड़ा वक्त दान किया, पहुंचा मन के आंगन में, बेल मारी टिंग टोंग, किसी ने दरवाजा खोला और वो बोला कि किससे मिलना है, खुद से। इस कतार में इंतजार कीजिए, क्योंकि अपने आप को मिलने से पहले आपको समाज की नजरों से मिलना है, दुनिया की खबरों से मिलना है, माँ बाप की झूठी उम्मीद से जो बेवजह ठुकराए उस नींद से। अरे हाँ, किसी से मिलने वाले झूठे वादे भी तो हैं, खुद के मन में ही सही पर खड़े हुए इरादे भी तो हैं। और मिलना तो सपनों को भी है, और गुरूर के नशे में लगा इन शर्तों को भी। और वो जो इतने वक्त से अनकहे जज्बात बनकर खड़े, उनका क्या? एक झटके में किसी के लिए तोड़ दिए वो सिद्धांत भी है, उनका क्या? उसके एक इशारे में जो उम्मीद बंधी है, उसका क्या? ये जो निभाने ही पड़ेंगे वाले रिश्तों की संधि है, उसका क्या? ये डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट वाले इश्यूज भी तो है, और संडे के बाद आने वाले मंडे ब्लूज भी तो है। खुद से लगाई हुई उम्मीद तो बहुत पीछे खड़ी है, उससे पहले मिलने के लिए हजार बातें पड़ी। उस ढलती हुई उम्मीद के पीछे खुद से मिलने का एक झूठा आशियाना सजाना। अगर इन सब के बावजूद भी जिंदगी बचे ना, तो खुद को मिलने चले आना। थैंक यू सो मच। Okay, wow, that was a very nice take. Thank you so much, Rahmat, and I'm pretty glad थैंक यू। you could perform it without the issues. We wouldn't have हाँ, wanted to miss out on ये this. आई एम ग्लैड अबाउट दैट। है ना, बहुत ही बढ़िया था. With the right touch of humor, right tone, सब कुछ मस्त था. I could sense a lot of hope. मुझे sadistic चीजें बड़ी पसंद आती है सुनने में, but it ended on a sense of hope और वो काफी अच्छा लगा. And the fact that you have a background of acting, I think वो काफी voice modulation में भी काफी दिख रहा था वो. Even though in a setting of the online space, उसकी limitation में you were able to express that. मुझे काफी मजा आया सुन के. I was laughing throughout, like in a very थोड़ा sadistic way as well, but in a very happy way as well. Yeah, but I think as an artist, एक वही बात है कि even if you tell people that I'm going through something and we are going through something, but what makes you a fine artist is that you give them hope at the end. We are going through this. I know, I relate to you, but things are going to get better. Always have that couple of friends, right? We are lost in our journey, like in 10th, 12th, or in on our graduation, we had some friends. But while in our journey of life, somewhere we just lost touch of them. We sometimes regret that we could have we could have maintained the relation, but somewhere it was our fault also. It's kind of regret and filled with that. It goes like, ये कहानी है मेरी और एक मेरे दोस्त तालाब की. गया वो छोड़ मुझे, कुछ मेरी कुछ गलती थी हालात की. एक बड़ी दोपहर में मिला मुझे वो, रुका था मैं वहां अपनी प्यास मिटाने को. ठहरा कुछ देर, सुने कुछ किस्से उसके, उसकी गहराई में मैंने पाया अपने आप को. फिर क्या था, रोज गुजरना वहां से, बैठना उसके किनारे कुछ पल बिताने. कभी सुबह की पहली किरण देखने, तो कभी ढलती शाम के बहाने. एक बड़ी दोपहर पड़ी मेरी नजर उस शहर की ओर जाते मोड़ पर. रुका ना मैं, जैसे कोई बंजारा, चल दिया बिना सोचे गांव मेरा छोड़कर. आंखों में अलग ही उमंग थी और पाँव में कुछ ज्यादा ही जान. भूल गया अपने दोस्त को कहना अलविदा, आऊंगा लौट के जल्द, दिया खुद को ये पैगाम. चला खूब दूर तक पर न खत्म हुआ रास्ता, और ना ही खत्म हुई मेरी आशा. धूप सर पे और सामने कोई छत न दिखे, मृगजल के सहारे मानो चल रहा था ये प्यासा. चला बहुत दूर पर ना मिली कोई मंजिल, और एक अनजान मोड़ पर आ चुका. ये नया रास्ता था मुझसे आगे बढ़ रहा, और पुराना था मैं पीछे छोड़ चुका. बड़ी मुश्किल से समझाया खुद को, लौटा वापस अपने उस गांव की ओर.
जहाँ था मेरा सच्चा दोस्त, सूरज की किरणें और पंछियों के शोर। थका हारा पहुंचा मैं गांव, लेकिन अब उन पेड़ पंछियों के लिए था मैं अनजाना। सोचा वो दोस्त तो था नहीं भूलेगा, गया भागता वहां पे जहाँ था हमारा ठिकाना। आंखों पे मेरी मुझे विश्वास न आया, वो भरा हुआ तालाब अभी तो था यही, कैसे गया छोड़ मुझे। लगा था ना समझ सिर्फ मैं हूँ वो नहीं, पर वो भी आखिर था अकेला, क्यों देखता मेरी राह वो। मिले उसी सूरज की थोड़ी धूप, निभाने साथ उसका बन गया भाप वो। बैठा हूँ अकेला उस ठिकाने हमारे, याद आते हैं पल और वो किस्से हमारे। सोचता हूँ क्यों गया मैं उस मृगजल के पीछे, काट लेता जिंदगी गांव में ही उस दोस्त के सहारे। Yeah, that's how it is. There's one more. So this is what I wrote when I was preparing for CAT. And the first attempt I couldn't get the like up to my aspirations. So just for second time. Okay. So if anyone who is preparing for some exam or something in their life and they're feeling stuck somewhere, this is for you. Okay. So it goes. It's the name of the poem is देखा जाएगा। अब वो कदम उठा लिए हैं तुमने, चल लो थोड़ा और, जो ना मिली मंजिल तो देखा जाएगा। अब जो दिल को इतनी बार मनाया है, एक बार और ही सही, जो टूटा फिर से तो देखा जाएगा। अब जो अपनों को अपने सपने दिखा चुके हो, ले लो उनसे थोड़ी और मोहलत, जो रूठे वो भी तुमसे तो देखा जाएगा। लिखते बहुत हो अपने गहरे सच, आज इस कागज को भर दो अपने सपनों से, जो ना हुए सच तो देखा जाएगा। Yeah, that's yeah. Thank you so much. That's it. हर्ष, तुम्हें ज्यादा लिखना चाहिए। जीआरई को ये इसमें बदल दिया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। So here goes. I strolled into a bookstore when I was going through a reading slump. I usually walk out wanting more, but that day something was off. I was picking out books only to put them back in. Thriller, no. Non-fiction, pass. Romance, over it. This has started to sound like my dating life. If I'm buying a first-hand hardcover, I might as well make sure that I love it. Maybe scroll through Goodreads reviews, maybe ask my book obsessed friends, maybe this, maybe that. If I'm investing into something, I might as well love all of it, the start, the middle, the end, and the experience of it all. There's no way I can do that, right? There's no formula. I'm realizing that this is me with regards to every decision in my life. I can't pick a B school. I can't pick a movie. I can't pick a location. I can't pick a guy. I can't pick a book. I can't pick a mood. I want all of it to be perfect, even if it's not. I want it to be worth it. I did enjoy the book that ended in 2 days, but I won't ever pick it up again. It wasn't that great. Thank you, next. I did enjoy the thick novel that took forever to complete, and I'm surprised as to how did I ever complete it. I don't think I can do it ever again. I remember picking up books of different genres. How did I ever complete 50 books? Did I have the courage to put the books I couldn't complete at the back of the shelf? I found my way here in the bookstore for the umpteenth time. How did I ever choose? How did I end up being tagged as a reader? How did I commit to that tag when there are millions of other genres I've never tried and stories I don't know and I'm probably going to die the same way? Lol, I don't even remember things about the books I already read. Books happen to me, just like everything else in our lives. People have got it right. There are plenty of fish in the sea, but sometimes people forget that fishing rods aren't served like ladles in a dal curry. Fish come to you. It's a catch. I'm waiting for another book to happen to me. I know I will be ready then to experience it. I'm wanting for life to happen to me. I'm waiting for it because sometimes all you can do is patient. It's not always your fault. So this like reading slump को हर एक angle से ले लिया था. I don't know how did that also happen to me. So there's that. So it's coming from this space of, जब life में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, you have the small things. And the people who don't have the big things make a big deal about the small things. And I'm one of those people. I make a big deal out of the small things. And when the big things don't come to you, all you have is your senses, your gift of hearing, your gift of seeing. The next two poems are going to be about how just these two senses, our senses in general, can bring us so much joy. And what my body saw and what I heard and what I live with, right?
So the first one's laughter. I love listening to laughter, right? So I'm just gonna go. I love how our laughter holds each moment between the eyes and the mouth. Makes me wonder if time can be stopped in its tracks for a minute of loving. Do you see the way each chuckle tickles the weight of our being into lightness? Or the way it sends the body into a swirl dance in time's old twisted arm? How it defies gravity in our collective predicament, and how it kindly shuts our eyes and pumps the sand out of our lungs. I love to hear people laugh. It tickles me into living out of the general paralysis of urbanness. That's one. My love for laughter. I have a lot of poems on laughter. It's a poem that happened with a conversation I was having with Sankalp on an Instagram live. But उस time लिखी नहीं थी. I had just started talking and the poem had started to form in my head. And मैंने थोड़ा सा बोल भी दिया था. I think he asked a question about how I handle the different parts of me. I'm a psychologist, social worker, and a poet. So you have to be born several times to learn how to live. The first time around, you learn to love the world with all your senses. You eat mud, you hear the song of streams running and blabbering in glee. You talk to the babbling brook of the ocean, the river, and the tap before you learn your first words. The second time, you learn our language. You see and hear and learn to fear. You fear anything your eyes can't see or your ears can't hear. You fear the heat and cold and turn away from the song of your breath. You stop speaking to everything that doesn't possess language, annihilating yourself. The third time you're born, you realize your body doesn't speak. You grow silent and you allow the rain to pour into the mouth of your pores. You taste it with your entire being, speaking to this new openness. You let touch register its intentions and you let yourself be held over and over again. The fourth time, you breathe consciously, as if you want to let the world inside you, passionately. You breathe to fill yourself with the choicest parts of the world. You breathe in the mornings at the park, your childhood home, your school, and all the places in between. You breathe in shared moments where the musk of gentleness mixes with the smell of tea. The fifth time, you realize you've become a museum of moments. You know you hold stories and histories in color, haptics, and smell. You become a traveler of sensory worlds through the sublime layers of living. Your awareness of each sense grows. You become life's whole dance and dance with it. That was beautiful. When you said that we are beautiful human beings, you are one of them. So thank you so much for sharing that, Shreya. Be childish in comparison to all the other performances that have happened. But this is something that I've been wanting to write about because I'm just giving a 2 minute context. I was talking to one of my friends and we were like, why is the dating life so, westernized, and how do people just move on from one person to another without having this internal homeostasis? You are spending some time with one person and then going on to the next without thinking about the first person again, second person again, whatever. So this is about that. It's not properly framed, but here I go. So you must be knowing how those classics go, right? She's a believer, he's not. Same old, same old. But the thing is, our generation has collectively taken an oath to believe that happily ever after doesn't exist. And we are out here, when I say out here, I mean dating apps, wanting this exactly unattainable happily ever after while swearing off commitment. We have taken, if it's meant to be, it will be, way too seriously, but without giving in serious efforts. So here's the modern day version slash Taylor's version slash my version slash your version slash probably everyone's version today. Disclaimer, hereon I'll use pronouns to narrate for the ease and not for being sexist. So शब्द को पकड़ो, भावनाओं को पकड़ो, पर pronouns को मत पकड़ना. Tring tring, I call her. Hello, rant time. She grumbles, which loosely translates to what did this guy do to you now? But she'll bear with me just like you all will. So here is the story, the rant. So a girl met a guy, literally. They met today. She's in a lavender dress, perfectly winged eyeliner, and a chapstick in bag for a touch up before she reaches the venue. She's not the one who dresses up, by the way, but today she has. He's there along with his
modern day beliefs. I'll skip the details, but at the end of it, he shrugs and says, "We are not committed." Because you see, she met a guy, but he met a girl and then another and then another. Meanwhile, she was unaware. She was happy with good morning text until now, with sunflower emojis. She thought that it was cute. He knew her favorite flowers, her favorite food, and goddamn must he be having some really great memory and a mom filled with a bag of badam if he remembered all of these details for all the other girls as well that he writes by. Stay with me because I'm coming to an end because that's how short her feelings are forced to last. She ran for 20 minutes straight to her best friend, and at the end of it, she also shrugs. She shrugs and quips, "Men." So now she's wondering if the problem was with the men or with her herself because she did dress up for him and put in all the little efforts and found every little thing that he did to be cute. Now, I can end it by saying he's not a believer, she's not a believer, I'm not a believer, you are not a believer. But the irony is that while we swear off commitments, we are all sitting here making feelings into poetry. That's it.